Good morning, everyone. Welcome to RAYACADEMY IAS. Welcome to my class. My name is Stuti Mahanti, and I'm a weekly current affairs पढ़ू national current affairs, right? State रो तमरो every Sunday हुए, okay? तो जेहेतु last class हे परि नथिला, तो दीटा जगह class रो तमाने दीटा week रो current affairs आमे आजी complete करिबा. That means March 16 रू March 29 जहाँ भी current affairs अच्छी will complete today. Okay, so please make sure if I'm audible and visible, then we can start. Am I audible? सब ठीक अच्छी तो? तो जो माने भी जति जॉइन हबा को चाहू छ राय एकेडमी रे, देन तुमको ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मीडियम रे क्लास तमे नै परिबो, टेस्ट वगैरह दे परिबो हला. पूरा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पई फाउंडेशन बैच रे तमे जॉइन हे परिबो इफ यू आर टारगेटिंग फॉर नेक्स्ट ईयर. ए वर्ष तो हे परिबोनी पूरा बिकॉज तमरो एग्जाम ही अछि जून रे. जो माने नेक्स्ट ईयर पे टारगेट करूचो देन तमे पूरा एंटायर ए पैकेज टे नै परिबो. किछि भी इंफॉर्मेशन दरकार तमे कांटेक्ट करि परिबो गिवन नंबर रे एठी. ओके, अच्छा, सो आई होप तमने देखि थिबो ये न्यूज़ कि एक्साइज ड्यूटी कट हेची पेट्रोल आउ डीजल उपरे. ता माने likely there are chances कि पेट्रोल और डीजल रो प्राइस कम हे पारे. जहाँ भी युद्ध परिस्थिति अच्छी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद अच्छी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज रो लोकेशन कौन ए सब जिनस हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे कवर अप करिछु, राइट? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जेहेतु बंद अच्छी तमे देखि थिबो कि बहुत असुविधा हमको देखिया को मिलुछि. एलपीजी माने जो गैस मिल पारि नाही, राइट? आउ पेट्रोल रो ए सब जिनस रो प्राइस गुडा को बढ़ी बारे लगी छै. अब सेही टाइम रे ए उटे न्यूज़ आछि कि एक्साइज ड्यूटी हमर कट हेछि पेट्रोल और डीजल ऊपर. ओके, बाय द वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को दीटा कंट्रीज मझिरे अछि के कहबो मते कमेंट रे को. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज रो लोकेशन रे कोन जोटा हमें पढी थिलु, और एटलीस्ट एति को ओशन रे रिलाई करे. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ओशन रे लाई करे सेति को. ओके, वो एंड ए न्यूज़ टा में वर्तमान देखिया कोन हेछि. बेसिकली Indian government has reduced the excise duty on petrol and diesel by 10 rupees per liter. लीटर को 10 टंका माने 10 rupees per liter excise duty कमिछि to shield consumer and oil and marketing companies from rising global crude prices. Globally जति हम देखिबा crude oil रो प्राइस बढ़ी बढ़ी जाउछि हला. तो जदि हम एक्साइज ड्यूटी कम करूछु देन हमरो एक्सपोर्ट रे भी एटा हेल्प करि परिबो. ओके, तो ये जो फ्यूल एक्साइज ड्यूटी कट कोन, एक्साइज ड्यूटी माने होछि को प्रकार टैक्स सेटा होछि गोटे इनडायरेक्ट टैक्स. दि प्रकार टैक्स थाए, डायरेक्ट टैक्स थाए, इनडायरेक्ट टैक्स थाए, राइट? एक्साइज ड्यूटी टा हमरो इनडायरेक्ट टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? स्टेट गवर्नमेंट पकाए ना सेंट्रल गवर्नमेंट पकाए? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द मैन्युफैक्चर और सेल. मैन्युफैक्चर रे भी पके पारे, सेल रे भी पड़े ऑफ स्पेसिफिक गुड विद इन द कंट्री. ओके, so in this recent move the government slashed the duty to ease the financial burden on OMC. OMC माने oil marketing companies. Okay, bringing the excise on petrol down to approximately ₹3. माने आगुरु 13 टका थिला, एबे 3 टका हे गला. 10 टका पर लीटर कमिछि. आगुरु 13 टका लीटर पर लीटर थिला एक्साइज ड्यूटी, एबे 3 टका पर लीटर हे गला. आउ डीजल उपरे कोनोसी भी एक्साइज ड्यूटी पड़िबो नाही. आगुरु डीजल उपरे 10 रुपीस पड़थला,
वर्तमान डीजल ऊपर एक्साइज ड्यूटी हमर पडुची 0 ओके पर लीटर एम आई क्लियर ओके सो क्रूड ऑयल रो कॉस्ट भी तमे अच्छा आउट जिंस क्रूड ऑयल हमर वर्तमान चंडीखोल रे भी क्रूड ऑयल रो गोटे खोलिबार प्लानिंग चली ओडिसा रो चंडीखोल तमे जानथिबो सो क्रूड ऑयल रो कॉस्ट भी बढ़िबारे लागिछि जोटा कि हमर रॉ मटेरियल पेट्रोल डीजल पाई रॉ मटेरियल होची क्रूड ऑयल आउ इंडिया कोन करे पाखापाखी 85% आमे बाहरु इंपोर्ट करू ओके इंडिया imports approximately 85% of crude oil from outside the cost is highly sensitive to global benchmark right a weaker rupee automatically makes fuel more expensive जदि रुपी कमी जाउची ऑटोमेटिकली fuel तमरो बढ़िबो ही बढ़िबो ओके जदि बा ग्लोबल ऑयल प्राइसेस रे किछि चेंज आसुनी बट जदि रुपी कमी जाउची तमरो पेट्रोल रो दाम किबा जे कोनोसी भी ऑयल रो दाम निहाती बढ़िबो ओके गुड मॉर्निंग चंद्र हेम्ब्रा आ गोटे जिनस गोटे टर्म मन रखिथिबो आरटीपी आरटीपी माने हला रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस जेतेबेले हमें बाहर क्रूड टा किनुचु जेतेबेले हम पाखो क्रूड टा आसुची ताको प्रोसेस करबा निहाती दरकार बिकॉज सेटा पूरा गोटे रॉ मटेरियल से क्रूड ऑयल टा को हमको प्रोसेस करियार अछि तो आरटीपी कोन इट इज द प्राइस चार्ज्ड बाय द रिफाइनरीज टू द ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को चार्ज करे आरटीपी रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस रिफाइन करिया को पड़े से क्रूड ऑयल टा को तार भी गोटे प्राइस टा पड़े ओके इट इंक्लूड्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग प्लस ओशन फ्राइट हैला ओशन फ्राइट माने जे से आसुची बाहरु से सब जिंस इंक्लूड हबो इंश्योरेंस वगैरह पोर्ट चार्जेस सबु इंक्लूड हे कि हमको गोटे आरटीपी पचारि पारे एग्जाम रे तुमको पचारि आरटीपी कोन आरटीपी खाली रिफाइन करिबा पई प्राइस दुह सेटा रिफाइनिंग भी रहिबो ता बादे ओशन फ्लाइट चार्जेस जो रहिबो सेटा भी रहिबो इंश्योरेंस कॉस्ट रहिबो पोर्ट चार्जेस से सब मिसेला परे ही तमरो आरटीपी टा डिसाइड करा जाय ओके किए काहा को दिए एटा ओएमसी ऊपर ए जिंसटा चार्ज करे किए रिफाइनरीज गुडा जो माने थांती से माने ओएमसी ऊपर चार्ज करन ओके ओएमसी माने कोउटा आईओसीएल बीपीसीएल एचपीसीएल सब तुम सुनि दिबो एमान को हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बोली कहू ओके दे सेथरे कोन करंती से माने गोटे ऑपरेशनल मार्जिन ऐड करंती तो आरटीपी गोटे पडिला जोटा कि रिफाइनरी चार्ज करे ओएमसी ऊपर देन आ गोटे ऑपरेशनल मार्जिन के चार्ज करे एटा ओएमसी चार्ज करे टू कवर देयर ओन कॉस्ट तांकर निजर कॉस्ट को भी से माने कवर करिवे प्राइस ता केमिति डिसाइड हुए फ्यूल रो हमें से जिंस रो देखु छ वर्तमान so this includes the expense of transporting fuel from refinery to storage depot refinery to storage आसीबा पई जो खर्चडा से माने से पके बेथरे हला से मार्जिन रे गुड मॉर्निंग देबकी तापर पेट्रोल पंप को जीवा पई जो चार्जेस लागिबो एज वेल एज देयर कॉर्पोरेट ओवरहेड एंड तांकर निजर प्रॉफिट सब ऐड हुए ए ऑपरेशनल मार्जिन रे तो दीटा कॉस्ट ऐड हलाडी बेस प्राइस जहा थिबो फ्यूल रो ता ऊपर आरटीपी रो कॉस्ट ऐड हुए ता ऊपर ऑपरेशनल मार्जिन रो कॉस्ट ऐड हुए हला बुझिलो तापर तमर पड़े गोटे फिक्स्ड रेट टैक्स जोटा को हमें एक्साइज ड्यूटी बोली कहू टैक्स ओके जोटा किए पके यूनियन गवर्नमेंट अनलाइक सम टैक्सेस दैट आर अ परसेंटेज दिस इज यूजुअली स्पेसिफिक रुपी पर अमाउंट लीटर जोटा मु तुमको एबे कहिली पेट्रोल पई एट प्रेजेंट इट इज 3 rupees per liter आउ वर्तमान डीजल पई एक्साइज ड्यूटी इज 0 rupees per liter ओके तो हमें गोटे स्पेसिफिक रुपी पकाओ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी रे इट इंक्लूड्स बेसिक ड्यूटी रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस ए तीनटा जिंसो सेथरे इंक्लूड हेकी थाय ऑलरेडी ओके तापर आसे आ गोटे डीलर कमीशन केमिति प्राइस बढ़े देखो आरटीसी हला तापरे ऑपरेशनल तमर कोन मार्जिन जोरा कि ओएमसी चार्ज करे तापरे एक्साइज ड्यूटी पड़िला तापरे तमरो डीलर कमीशन पड़े
है जोटा कि ऑब्वियसली जे पेट्रोल पंप खोली बसथिबो ताको भी तार प्रॉफिट दरकार तो तार स्टेशन टाको चलेबा पई जेति ताको कॉस्ट दरकार है एम्प्लॉय मान को से भी पेमेंट दबो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तार निजर प्रॉफिट ए सब को फिर से ऐड हुए एटा भी गवर्नमेंट डिसाइड करे बाय द वे ओके तापर तमर पड़े गुटे स्टेट टैक्स व्हिच इज वैल्यू एडेड टैक्स है एटा होची गुटे परसेंटेज जबकि एक्साइज ड्यूटी स्पेसिफिक रुपीज हमें कहलु बट स्टेट टैक्स गोटे परसेंटेज हिसाब रे पड़े बिकॉज इट इज अ परसेंटेज ऑफ द सम ऑफ ऑल प्रीवियस कॉस्ट जहां भी प्रीवियस कॉस्ट हला तार सम हबो आ ता ऊपर तमरो टैक्स टा पड़िबो हला तो जदि तमरो बेस प्राइस बढ़ुची ऑब्वियसली तमरो जो स्टेट टैक्स टा बढ़िबो ओके so this is why fuel prices vary significantly between states एबे तमे देखिथिबो हमर ओडिसा रे गुटे 101 जदि अछि महाराष्ट्र रे 103 थिबो कोठी अलग अलग स्टेट रे तमर पेट्रोल डीजल प्राइस रो वेरिएशन कोन पे देखिया को मिले बिकॉज ऑफ दिस स्टेट वैट हला सेति पे तमर अलग अलग स्टेट रे जेमदि कि फॉर एग्जांपल गोवा रे तुमको जेहेतु तांकर वैल्यू एडेड टैक्स कम पड़े तो तुमको सिटी पेट्रोल रो दाम कम देखिया को मिले राजस्थान रे महाराष्ट्र रे तुमको हायर वैल्यू एडेड टैक्स देखिया को मिले जोथि पई कि तमरो प्राइस ता पेट्रोल रो किंबा डीजल रो बढ़ी जाए ओके सो एंटायरली बुझिलो केते कोन जिंस ऐड हुए बेस प्राइस गोटे थिबो हला ता ऊपर तमरो आरटीपी ऐड हबो तापर ओएमसी रो मार्जिन ऐड हबो राइट तापर तमरो एक्साइज ड्यूटी हला तापर डीलर मानकर कमिशन हला तापर गोटे स्टेट वैट ऐड हला सेति स्टेट वैट जगु ही अलग अलग स्टेट रे तमरो ऑयल प्राइसेस गुडा को वेरी करे राइट ए सब जिंस हला परे तुमको फाइनल रिटेल प्राइस ता मिलिबो तो बेस प्राइस तमरो थिबो 45 रो 50% राइट तापर तमरो सेंट्रल टैक्सेस बाय द वे एटा परसेंटेज रे लिखा है बट जनरली एटा रुपीस पर लीटर रे पड़े राइट देन स्टेट वैट तमरो पडिला हला 15 रु 25% डीलर कमिशन तमरो थाए 3 रु 4% एमिति हे कि तमरो फाइनल रिटेल प्राइस रे डिसाइड करा जाए ऑयल रो पेट्रोल रो किंबा डीजल रो ओके बुझ परलो तो एक्साइज ड्यूटी जदी कट होची ता माने नो कि पूरा एंटायरली तमरो कमी जिवो बिकॉज़ ता छडा भी अलग जिंस गुडा को अछि जोडा तमरो डिसाइड करे ऑयल रो कॉस्ट एम आई क्लियर जेतु युद्ध उद्ध चली है ऑयल रो प्राइस सिलिंडर रो प्राइस तुम देखुथबो न्यूज रे कंटिन्यूअसली अछि तो सेति पे तुमको टिके नॉलेज रहिबा दरकार केमिति कोन प्राइस डिसाइड हुए ओके नेक्स्ट न्यूज हला आई होप एटा तुम जानथिबो avalanche हला avalanche जोगु जोजिला पास रे 5 to 7 आई गेस 5 रु 7 जनकर डेथ हबा को देखा जायछि तो मते तमे को जोजिला पास कोठी अछि एग्जैक्टली जोजिला पास रो लोकेशन मते के कहि परिबो कमेंट रे जोजिला पास रो लोकेशन wow where is Zojila pass located एटलिस्ट तमनको तो एटलिस्ट एति तमे क्लियर हे जिबा कथा कि टोटल हमर केतरा माने इंपोर्टेंट माउंटेन पैसेस गोडा को कोठी कोन अछि राइट नथुला जलेपला कोठी अछि ला माने पास राइट तो जोजिला ला माने हला से माउंटेन पासेस गुडा को राइट तो नथुला जलेपला कोठी अछि जोजिला कोठी अछि कश्मीर ओके ओके
नथुला जलपिला कोठी अछि? कुह चंद्र हेम्ब्रम यू आर सीइंग कश्मीर बाकी माने अच्छा देखो देखा होची इज इट विजिबल ओके तो ए जो पोर्शन टा तमे देखुछ हैला माउंटेन पासेस माने पहाड़ को काटी की रास्ता बना है जोटा हेथाय ताको माउंटेन पासेस बेले को माउंटेन पासेस जनरली हमें कोठी देखिया को पाऊ ऑब्वियसली हिल एरियास रे नॉर्दर्न स्टेट्स रे जेहेतु माउंटेन फॉर्मेशन गुड़ा हमर प्रायतः नॉर्दर्न स्टेट्स रे बहुत देखिया को मिले ना माउंटेन्स गुड़ा को फॉर्म केमिति हेतिला मन पड़छि तो जोठी माउंटेन्स गुड़ा को फॉर्म हुए सेठी तुमको माउंटेन्स देखिया को मिले माउंटेन्स को काटिले से पास टा को हमें कहू माउंटेन पासेस तो मेजर माउंटेन पासेस गुड़ा का हमर सब नॉर्थ रे ही लाई करे राइट नॉर्दर्न स्टेट्स रे तो एटा तमरो कश्मीर रे रहउछि ना लद्दाख रे रहउछि जोजिला पास कश्मीर रे रहउछि ना लद्दाख रे रहउछि देखो तुम निजे देखो जदि इथे क्लियर नहीं आ गोटे फिगर देखौछि एटी देखौछि एटी देखौछि इट कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर आउ लद्दाख तो आमे जदि कहिबा जदि देखिया को गले एटा तमरो लद्दाख रे ही लाई करे ओके जोजिला पास बारालाचा पास ओके तो जोजिला पास जनरली हमरा कनेक्ट करे जम्मू एंड कश्मीर रो लद्दाख रीजन को कनेक्ट करे एठी तमे देखि पाउथबो ओके तो जोजिला पास रे तमरो एवलांच देखा जाय जोजिला पास छडा कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर आउ कोन सब अछि बनिहाल पास अछि पीर पंजाल पास अछि हैला एटा अगेन तमरो लद्दाख रे आसी जीवो खारदुंगला एपटे तमे देखुथबो मिंताका पास परपिक पास खुंजेरे पास अगिल पास ए सब ना गुडा को तुमको मन रखिया को पड़िबो हैला काराटागला पास लानाकला पास पेंसिला पास चांगला पास इमिसला पास जदि तमे चाहू छो आ पे गुटे मु सबको गुटे स्पेसिफिक वीडियो आनीबी जोथरे ओनली आमे किछि शॉर्टकट्स सिखिबा माउंटेन पासेस को केमदी मन रखि परिबा देन वी कैन ब्रिंग दैट लेक्चर आल्सो हैला जदि सेमदी स्पेसिफिक लेक्चर दरकार तमे कहइबो कि माउंटेन पासेस गुडा को केमदी मन रखियाबो ओके तापे हमें स्पेसिफिक वीडियो को आनी परिबो जदि दरकार कहइबो मु आनी कमेंट कहले ही जानि परिबे अदरवाइज मु जानि परिबे ओके तो जोजिला पास रे एवलांच देखिया को मिले छी एवलांच रो माने कोन रैपिड डाउनहिल फ्लो ऑफ स्नो जेहेतु स्नो एरिया से गुडा को स्नोफॉल हुए स्नोफॉल हे सेठी तमरो स्नो रो माने माउंटेन गुडा को छोट छोट स्नो रे फिल्ड माउंटेन्स गुडा को हे जाय तो सेटा निहाती खसिबो ना तो जेतेबेले ए स्नो एठी फिल हे जिवो से स्नोटा जेतेबेले खसिबो ताको हमें एवलांच बेली कहू ओके रैपिड डाउनहिल फ्लो ऑफ स्नो किंबा आइस किंबा डेब्रिस दैट कैन बरी पीपल ऑब्वियसली गुटे तमे गाड़ी रे जाउछो माउंटेन पासेस गुडा को बहुत नैरो रास्ता गुडा को ए ऊपर तमरा स्नो भर्ती ही अछि से स्नोटा जदी खसी पड़ला गाड़ी ऊपर बहुत हेवी थाए स्नो गुडा को राइट गाड़ी ऊपर खसी गले तमे देखिथिबो इमेजेस गुडा को गाड़ी ऊपर खसी गले से गाड़ी गुडा को चेपा हे जाई एठी देखो एठी देखि परथबो एठी स्नो फिल हेगी थिला एटा खसी गला तो गाड़ी को पूरा से कवर कर दिए गाड़ी को चेपा हेपा कर दबो मनीष ऊपर पड़ गेले मनीष ऑब्वियसली डेथ हे okay so it is a natural disaster downhill flow of snow ice or debris that can bury people vehicles or infrastructure को भी bury करि परिबो okay heavy snowfall जब ही मोस्टली एटा देखिया को मिले एंड एबे तमे जदी देखि थिबो बहुत एरियास रे heavy snowfall plus rain देखिया को मिली छी ओके सिक्किम रे हेगला हला हिमाचल प्रदेश रे हला तमरो अटल
टनल तुम इंस्टाग्राम रील्स भी देखि बहुत स्नोफॉल होती कश्मीर रे तो जो बेसी स्नोफॉल हुए से चांसेस थाए तुमर एवलांच हबार ओके रैपिड टेम्परेचर चेंज हेले भी हुए है विंड डिपोजिट स्नो बेसी हो गले अर्थक्वेक हेले भी तुमर हबार चांसेस थाए और ह्यूमन एक्टिविटी जदि तुम बहुत व्हीकल से रास्ता रे मूवमेंट हुए ब्लास्टिंग वगैरह हुए देन से केसेस रे भी तुम एवलांच हबार चांसेस थाए ओके तो स्लैब एवलांच लूज स्नो एवलांच और वेट एवलांच तीन प्रकार एवलांच हमें देखिया को पाऊ आ विषय रे डिटेल जानिया हमको दरकार ओके तो मेजरली रोड ब्लॉकेज तो हुए आउ एक्सीडेंट्स भी बहुत देखिया को मिले सो सेति पे तुम ये देखि पारथिबो ये अराउंड 5 to 7 पीपल को डेथ हो जाइए ओके सो जोजिला पास रो लोकेशन जोटा कि तुम कश्मीर वैली आउ लद्दाख को कनेक्ट करे जोजिला पास तो दीटा जाक हमर बहुत सेंसिटिव रीजन्स गुडा ए दीटा सेंसिटिव रीजन को एटा कनेक्ट करिछि तो आ सहित तो बहुत हिस्ट्री भी तमरो रिलेटेड हेकी अछि जोजिला पास सहित ओके इट इज अ स्ट्रेटेजिक हाई माउंटेन पास इन द वेस्टर्न हिमालय often referred to as the mountain pass of blizzards हैला mountain pass of blizzards बोली कहा जाए it serves as the only terrestrial link between Kashmir Valley and high altitude cold desert of Ladakh only connecting region हैला जोजिला पास लद्दाख रु terrestrial connection माने land रे गोटे मात्र रास्ता अछि जोटी तमे कश्मीर रु लद्दाख को आसी परिबो that is through Zojila Pass. Okay. It is situated at an elevation of approximately 3580 meters from the sea level. Though some sections reach up to 5000 meters, making it the second highest pass on the Srinagar Leh highway after Fotula. तो Fotula होउछि तमरो नंबर 1 हाईएस्ट पास हमें कहि परिबा सेकंड हाईएस्ट होछि जोजिला पास ओके इट सिट्स ऑन द बाउंड्री बिटवीन गंडेरबाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख कहली दीटा स्टेट को तमरे ये माने यूनियन टेरिटरीज को कनेक्ट करछि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ओके तो जम्मू एंड कश्मीर रो गंडेरबाल डिस्ट्रिक्ट को लद्दाख रो कारगिल डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करछि ओके it connects Sonmarg to the Dras and Sudu valleys eventually leading to Leh okay पहली हिस्ट्री तो निहाती लाई करथिबो बिकॉज़ दिस इज द ओनली कनेक्टिंग लिंक टेरिटोरियल कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख तो जो 1948 रे गुठी इंडो पाक वॉर हेतिला आफ्टर इंडिपेंडेंस हैला The pass was a major battleground during the first Kashmir war because that was the only connection between Kashmir and Ladakh. ताको initially seize करा जाइथिला by Pakistan forces in 1948. तापरे ऑपरेशन बिसन तमरो कंडक्ट करा जाइथिला मन रखिबो ऑपरेशन बिसन 1948 नवंबर 1 रे हला इंडियन फोर्सेस ताको आउ थरे रिकैप्चर करथिले ओके तो 1948 रे ही माने स्टार्टिंग फेजेस रे जतबळे तमर इंडो पाक वार हेतिला तापरे कश्मीर ताको ऑक्युपाई कर देथिला हला ताको सीज कर देथिला मोस्ट प्रोबेबली हम कहि परिबा आउ ताको आउ थरे हम रिकैप्चर करि परथिलु सेम 1948 नवंबर 1 रे थ्रू ऑपरेशन बिसन सो ऑपरेशन रो ना थिला ऑपरेशन बिसन और बाइसन Indian forces recaptured the pass using tanks this remains the highest altitude at which tanks have ever been operated in combat in the world history हैला माने प्रथम थर पे एते हाईएस्ट एल्टीट्यूड रे टैंक आमे यूज रे आनी थिलु वर्ल्ड हिस्ट्री रे माने जदी देखिबो केही भी सेम के भी सिंत करनांती एते हाईएस्ट एल्टीट्यूड रे से माने टैंक्स के भी ऑपरेट करना थिले ओके आमे प्रथम थर करथिलु इन ऑपरेशन बाइसन To overcome the pass vulnerability to heavy snowfall and avalanche, Zojila Tunnel is currently under construction. Hello, तो Zojila Tunnel वर्तमान जेमि हमर अटल टनल तमे देखिथिबो
तो जोजिला टनल रो भी लेंथ तमर होची 14 किलोमीटर लॉन्ग टनल वर्तमान अंडर कंस्ट्रक्शन अछि ए सब एवलांच वगैरह ये सब को से प्रिवेंट करि परिबो ऑब्वियसली गोटे टनल जदि हम कर दोछ once finished it will be the longest bi-directional tunnel in Asia जदि कंप्लीट हुए then एशिया रो सबुठु लंबा bi-directional tunnel हबो जोजिला टनल क्लियर अच्छा ये सब जिनस एते इंपोर्टेंट नुह अच्छा it acts as a crucial supply route for Indian forces deployed in sensitive areas सियाचिन ग्लेशियर रे एलएसी रे जो माने अछंती तो सेमान को पे एटा गोटे मेजर सप्लाई रूट हैला तो सब बेले एटा ऑपरेशनल हबार अछि बंद हेले बहुत असुविधा हि जिवो मिलिटरी फोर्सेस पे सर्व्स एज द मेन लाइफलाइन ऑफ लद्दाख enabling transport of essential good लद्दाख को fuel food medicine सब एई जोजिला पास रो ही सब दिया जाए तो तार ऑपरेशनल रहिबा निहाती दरकार ओके so it is a very important zone clear okay next देखिबा हमें एनडीसी विषय टेके देखिबा because recently कौन हेछि मत को recently को मीटिंग एमती हेछि जोथरे एनडीसी विषय चर्चा हेतिबो recently को मीटिंग हेछि कोठी हेछि जोठी एनडीसी विषय कथा हेतिबो एनडीसी कोन ए सब जिंस हम ऑलरेडी आगरो पढिछु नेशनल कोन एनडीसी रे फुल फॉर्म कोन nationally determined contribution हैला तो इंडिया's updated energy goals लिखा है छी इंडिया's updated एनडीसी बोली भी हमें कहि परिबा हैला कोन पे माने एनडीसी कथा कोन पे उठिला रिसेंटली को मीटिंग हे छी कोठी हे छी हुआ हुआ गुड मॉर्निंग सौम्या पढ़ीछु तो जो पुराना स्टूडेंट जदि अच्छो तो माने जानिथिबो एनडीसी वगैरह सब कोन यस सर नो इंडिया तारो अपडेटेड एनडीसी 2035 पई हमरो अपकमिंग टारगेट कोन इंडिया वर्तमान दे देछि अंडर द यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज in line with obligations under the Paris Agreement. तो Paris Agreement जब हेइथिला 2015 रे सेबेठु हमें स्टार्ट करिलु कि फ्यूचर रे हमरो एनर्जी रिलेटेड टार्गेट्स कोन सब रहिबो राइट तो प्रथम एनडीसी जो हेइथिला हैला सेतबेले टार्गेट ईयर थिला 2030 हैला तो सेतबेले भी हमरो तीनटा गोल थिला गोल 1 होची reducing emissions per unit GDP हैला एंड ए परसेंटेज गुडा को बहुत इंपोर्टेंट बिकॉज लास्ट ईयर ओएस रे एग्जैक्टली पचरा जाइथिला केते परसेंट अचीव करि पारि छी इंडिया वर्तमान तार जो गोल देछि सेथरे केते परसेंट से अचीव करि पारि छी सब जिंस 45% ए 50% ए जिंस गुडा को स्टेटमेंट वाइज हमको पचरा जाइथिला क्वेश्चन रे बुझिपल सेथि पय दिस इज हाईली इंपोर्टेंट एंड जेहेतु वर्तमान नेक्स्ट 2035 रो हमरो टार्गेट्स गुडा को वर्तमान देछि हैला तो ए जिंस गुडा को वर्तमान वेरी इंपोर्टेंट तो प्रीवियसली जदि हमें देखिबा तीनटा गोल प्रथम हैला एमिशन इंटेंसिटी टा को रिड्यूस करबो नॉन फोसिल इलेक्ट्रिसिटी सोर्स गुडा को बढ़ेबो हैला एंड क्रिएटिंग एडिशनल कार्बन सिंक हैला तो प्रथम जिंस हैला ए जो एमिशन इंटेंसिटी 33 रु 35% थिला then 45% हैला वर्तमान 47% हमरो टारगेट रखा है ओके
जदि आम नॉन फसिल इलेक्ट्रिक सोर्सेस यूज कथा कहबा देन 40% आम टार्गेट थिला एनडीसी 1 रे 2015 रे एनडीसी 2 रे हमरो टार्गेट हेतिला 50% जेटा को आम ओवर अचीव कर देथिलु आम 52 या 53% ऑलरेडी फसिल फ्यूएल रो यूज करके देखैथिलु तार भी आम डिटेल रे क्लास रे डिस्कशन करिछु ओके अपडेटेड एबे वर्तमान हैला अबे हमर नेक्स्ट टारगेट हैला 60% हैला बाय 2035 ओके नेक्स्ट 9 इयर्स रे हमर टारगेट हैला कि आम नॉन फसिल फ्यूएल यूजेस गुडा को बढ़ेबू टारगेट अछि 60% ओके एंड जदि आम कार्बन सिंक कथा देखिबा प्रथम थिला तमर 2.5 रु 3 बिलियन टन हैला सेकेंडरी भी सेम रहिला वर्तमान हम एटा को अपडेट करछु 3.5 टू 4 बिलियन टन अपडेट करछु ओके एंड एटा तुम देखि परथिबो ऑलरेडी के 2030 रो हमरो टारगेट थिला 50% के बाय 2030 हम 50% अचीव करिबू नॉन फसिल इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेस जोटा कि हमें ऑलरेडी फेब्रुअरी रे 52% अचीव करि सारथिलु ओके तो ए परसेंटेज गुडा को हाईली इंपोर्टेंट 60% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हमरो नॉन फसिल सोर्सेस रो आसीबा दरकार बाय 2035 वर्तमान हमें ऑलरेडी 52% अचीव करि सारछु ओके इंडिया ऑलरेडी अचीव्ड 52% टारगेट वाज टू अचीव 50% बाय 2030 बाय 2030 हमर 50% टारगेट थिला हम ऑलरेडी 52% अचीव करि सारिछु 2035 पय हमें टारगेट ऑलरेडी दे सारिछु 60% ओके तो को सोर्सेस सोलर विंड हाइड्रो बायोमास न्यूक्लियर ए एनर्जी सोर्सेस रो हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिया पड़िबो ओके अर्ली अचीवमेंट ऑफ 2030 टारगेट शोकेसिंग रैपिड रिन्यूएबल एक्सपेंशन ओके तापरे एमिशन इंटेंसिटी भी कमेबार अछि तो टारगेट अछि 47% रिडक्शन हमें करिबा इन एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 2035 प्रीवियसली हमरो टारगेट केते थिला ऑलरेडी तुमको म कहली 45% थिला वर्तमान हमरो नेक्स्ट 2035 पे टारगेट अछि 47% ओके एंड 2030 टारगेट इज 45% रिडक्शन करंट प्रोग्रेस जदि हमें देखिबा 36% ऑलरेडी हमें अचीव करि सारिछु बाय 2030 हमर सेटा टारगेट अछि 45% तो लेट अस सी 2030 रो टारगेट और 2035 रो टारगेट हमें मीट करि पारछु कि नै और किते जल्दी मीट करि पारछु ओके दिस रिफ्लेक्ट्स कंटिन्यूड एम्फासिस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी एंड लो कार्बन ग्रोथ राइट तो अगेन बारंबार कहूची ए गुडा को मन रखिबो निहाती कि 60% आमे इलेक्ट्रिक पावर नॉन फसिल सोर्सेस रो आनिवार अछि 47% हमको एमिशन इंटेंसिटी कमेबार अछि आ गुटे कार्बन सिंक बनेबार अछि विथ 3.5 टू 4 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट थ्रू फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ओके तो केबिठु एनडीसी स्टार्ट हेतिला 2015 रु जेबिठु पेरिस एग्रीमेंट हमर साइन करा जेतिला सेबिठु तमरो प्रति कंट्री से माने फ्यूचर टारगेट्स तांगरो एनर्जी रिलेटेड से माने दियंती ओके तो एटा भी तमे देखिलो कि आगुर एटा 2.5 रु 3 बिलियन टन थिला कार्बन सिंक एबे हमें आको 3.5 रु 4 बिलियन टन इंप्रूव करिजो ओके एंड 2021 सुधा ऑलरेडी 2.3 बिलियन टन हमें अचीव कर देथिलु एंड एनडीसी कोन ऑलरेडी हमें डिस्कशन करिछु दिस आर वॉलंटरी क्लाइमेट एक्शन प्लान अंडर द पेरिस फ्रेमवर्क अपडेटेड एवरी 5 इयर प्रति 5 वर्ष रे हमको से टारगेट गुडा को अपडेट करिया को पड़े विथ इंक्रीजिंग एम्बिशन रिफ्लेक्टिंग नेशनल सर्कमस्टेंसेस एंड कैपेबिलिटीज ओके तो प्रथम एनडीसी हेतिला 2015 रे टारगेट थिला 2025 सेकंड हेतिला 2022 रे टारगेट थिला 2030 और वर्तमान रिसेंट हेछि थर्ड एनडीसी 2026 रे टारगेट दिया हेछि 2035 रो ओके तो नेक्स्ट देखि पारथबो 2021 रे सेटा हबा कथा एक्चुअली 2022 हे गेला पाखा पाखी 5 वर्ष परे सेटा होछि लास्ट हमर 2022 रे हेतिला वर्तमान 4 वर्ष भीतर एटा हे गेला ऑलरेडी
ओके बिकॉज से सेकंड टा जेतु लेट हितले एनडीसी सेति पे वर्तमान थर्ड टा हमरो टाइमली हि गेला ओके एगुडा को मन रखिबो इंडिया रो क्लाइमेट स्ट्रेटजी रे कौन कौन आम लिखिपर जदि क्लाइमेट रिलेटेड किसी लॉन्ग आंसर हमको लिखार अच्छी है ऑब्वियसली आम एनडीसी कथा लिखा एनडीसी आम कौन कौन अचीव कलु केते परसेंट अचीव कलु केते टार्गेट थिला ये सब जिन लिखा पड़ो ता छड़ा भी आम जहाँ भी स्कीम्स अच्छी है जल जीवन मिशन हो गला तापर तमर मिष्टी एटा भी आम पढ़ी ऑलरेडी मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम्स है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान सॉइल हेल्थ कार्ड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये सब स्कीम विषय भी टिके टिके लिखा पड़ो बिकज ये सब रू ही आम एनर्जी आड़े काम करूँ ना ओके एंड आमर सब पीपल सेंट्रिक अप्रोच रही है India's climate efforts are centered around the principle of lifestyle for environment एटा भी आम पढ़ीचु मन पड़े life mission life which is transforming sustainable living into a mass movement sustainable goals को आम केमिति सब schemes रे apply करि पारुछु ओके initiatives like एक पेड़ माँ के नाम transformed tree plantation into a driven people driven climate action ये सब जिनस हमको लिखे को पड़िबो जदि climate related किछि क्वेश्चंस आसुची ओके वेटलैंड जहाँ भी जिनस तुम जानिछ सब जिनस तुम लिखि पारिबो करंट फॉरेस्ट कवर जदि आम देखा इज नियरली 24.6% है आमर टार्गेट अच्छी फॉरेस्ट कवर एटलिस्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हिसाब रे फॉरेस्ट कवर 33% रहा दरकार बट वर्तमान वी आर लैगिंग बिहाइंड 24.6% आमर फॉरेस्ट कवर रही ओके तो कौन आम कर दिस आर द चैलेंजेस जो पीडीएफ मिल सब देखीदब तुम आंसर राइटिंग हेल्प कर कि आम जो बर्तमान 60% टार्गेट देचु दैट इज आल्सो अंडर एम्बिशियस बिकॉज ऑलरेडी आम 52% तो अचीव कर सारी तो आम अधिक टार्गेट दबा कथा 70% 80% एमती टार्गेट दबा कथा बट आम 60% जो देचु क्रिटिक्स कहते दैट इज अंडर एम्बिशियस ये सब है चैलेंजेस है फॉरेस्ट कवर आम लिमिटेशन रही जाऊँगी डेवलप्ड कंट्री में से माने कमिटमेंट यू नो रोल बैक करुँच ये सब जिन गुड़ाक तुम रोचे है तो तार वे फॉरवर्ड आम कौन कौन सब कर क्लाइमेट फाइनेंस केमती आम इम्प्रूव कर कौन कौन नुआ पॉलिसीज नुआ रिफॉर्म्स आम आनीपर ये सब क्लाइमेट सेक्टर एनर्जी सेक्टर ये सब जिन आमको देखा पड़ो ओके सो इंडिया's updated 2035 NDCs reflect a measured yet pragmatic escalation in climate ambition rooted in equity and developmental realities. Okay, while the country is on the track to meet or exceed several existing targets, concerns remain about the adequacy of ambition in the face of global climate crisis. मैंने already हम achieve कर सारी but फिर भी है आउटे हमको करिया को पड़िबो निहाती गोइंग फॉरवर्ड इंडिया's role will be crucial in shaping a just inclusive and sustainable global climate order particularly as a voice of the global south तो global south रो voice हिसाब रे वर्तमान हमें सब आडे आगे रहउछु हैला तो हमर जहाँ भी डेवलपमेंट हबो हमर टारगेट जहाँ भी हबो एंटायर ग्लोबल साउथ रो टारगेट हम सेटा कहि परिबा बिकॉज़ वी आर इन अ वे रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबल साउथ एट करंट टाइम ओके ओके महद सत्याग्रह जो माने पुराना स्टूडेंट्स अच्छा काइंडली मते कुह कहा सहित आम एटा जोड़ू महद सत्याग्रह विषय में ऑलरेडी गोटे क्लास रे डिटेल रे पढ़ी थिलु हैला तो को इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी सहित आम अटैच करू महद सत्याग्रह कमेंट करो जल्दी
कह जल्दी कह। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। महत सत्याग्रह को आमे को इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी सहित लिंक करू। ऑलरेडी आमे गोटे क्लास रे पढ़ी सारछ। जो माने जदी पुराना स्टूडेंट्स के देखुछो त माने कहि परबो इजीली को इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी सहित आमे रिलेट करि परबा महत सत्याग्रह। व्हाट इज दिस महत सत्याग्रह पढ़िबा आमे आउथरे। दैट इज नॉट एन इश्यू बट को इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी सहित आमे आको लिंक करि परबे। नो आंसर्स येट। कोन सତରେ मन नहीं सीरियसली। केबे सुनिनो महत सत्याग्रह विषय रे बी आर अंबेडकर बी आर अंबेडकर सहित आम रिलेट करू एटा पढ़ी ऑलरेडी यार कम ऑन। तो महत सत्याग्रह 99 कौन पे कहगला 99th एनिवर्सरी वर्तमान तमरो 20th मार्च रे हला महत सत्याग्रह रो हला एंड द बिगिनिंग ऑफ इट्स सेंटेनरी ईयर। तो वर्तमान आमे 100th ईयर ऑफ महत सत्याग्रह रो अछु। दिस डे is officially observed across India as Social Empowerment Day to commemorate this landmark movement led by Dr. B.R. Ambedkar in 1927. Okay, 1927 मसीह महत सत्याग्रह होइथिला। मनुस्मृति टाकु से जळै देइथिले कोन पे हेतिला बिकॉज़ किछि जण को माने जो माने बैकवर्ड कास्ट रो लोक गुडा थे बिकॉज ही वाज आल्सो फ्रॉम द बैकवर्ड कास्ट राइट। तो से फील करि पाले से दुखटा को जो माने बैकवर्ड कास्ट रो लोक गुडा थे तांको से एरिया रो माने पानी पीबा को भी दिया गला नहीं। ओके पानी छुईबा को मना करा गला एटा माने छु अछूत अनटचेबिलिटी बहुत देखिया को मिलेला। पानी छुईबा को माने पानी पीबा को दिया गला नहीं जोटा कि हमर बेसिक नेसेसिटी हैला। तो ए सब जिंस जतले डॉक्टर बी आर अंबेडकर देखिले तो ही स्टार्टेड दिस महत सत्याग्रह। ओके एंड से टाइम रे सी वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर भी बहुत काम करथिले। ओके सेति पे आको हमें सोशल एम्पावरमेंट डे हिसाब रे भी कहू। दिस मूवमेंट वाज लेड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर। यस इट सर्व्स एज अ क्रिटिकल रिमाइंडर ऑफ इंडिया's फाउंडेशनल स्ट्रगल फॉर ह्यूमन डिग्निटी इक्वालिटी सोशल जस्टिस अगेंस्ट द ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम। ओके तो 1923 रे कौन हेतिला एसके बोल passed a resolution in the Bombay Legislative Council mandating that public water sources well dharamshalas be opened to the depressed classes हैला। गोटे रेजोल्यूशन पास करथिले एसके बोले और बोले 1923 रे कि जो भी तमरो पब्लिक वाटर सोर्सेस अछि वेल अछि धर्मशाला अछि डिप्रेस्ड क्लासेस पे सेटा खोला जाओ। ओके Mahad Municipal Council adopted this resolution in 1924 but severe resistance from dominant caste Hindus prevented the depressed classes from actually accessing the town's चौदार ताले माने चौद्वार टैंक जहाँ भी थिला सेठु पानी पीबा को डिप्रेस्ड क्लासेस माने को रोकी दिया गला। ओके सेथि पे तमरो महद सत्याग्रह स्टार्ट हेतिला because Dr. B.R. Ambedkar was highly influenced by Gandhi ji also. Okay तो जेहेतु हमरो सॉल्ट सत्याग्रह से टाइम रे ही थिला ताठो इंस्पायर हे कि से महद सत्याग्रह स्टार्ट करथिले टू assert the legal and moral right of Dalit to access the Chavdar tank. Okay
तो 1927 मार्च 20th मार्च रे he led a peaceful march to the Chavdar tank and drank water from it. से निजे जाएगी मोटे प्रोसेसन नहीं की जाइथिले निजे गले एंड से निजे जाएगी से टैंक रो पानी पी देइथिले because he was also from backward class. So breaking a centuries old caste taboo and asserting equality के समस्त इक्वल हम पे एमते हम काहा को मना कर परबेनी पानी पीवा को राइट गोटे पब्लिक टैंक रो खास करके सो अपर कास्ट ग्रुप जो माने भी थिले से माने अटैक करथिले प्रोटेस्टर माने को ए माने साइलेंट रिवोल्यूशन कला सत्ते भी जो माने ऑप्रेस्ड ग्रुप थिले से माने अटैक करथिले हला एमती रूमर माने ये करे कि ना कि से माने टेंपल भितर पसि गले बट टेंपल भितर से माने पसि नथले से माने बस पानी पीथिले ओके द टैंक वाज सिंबॉलिकली प्यूरिफाइड ताकू माने जेतु माने से पानी पी देथिले से टैंक को फिर प्यूरिफाई करा गला गोबर पकेकी आ माने गाई काउ यूरिन काउ डंग पकेकी से टैंक टाको फिर प्यूरिफाई करा गइसला ओके देन डिसेंबर 1927 रे आई होप ए सब जिंस तमे जानथिबो डिसेंबर 27 रे 1927 रे डॉक्टर बी आर अंबेडकर planned a second satyagraha but was blocked by a court injunction filed by upper caste Hindu claiming the tank was private property. माने एटा सीरीज रे चली थिला हला 1927 मार्च रे तमे देखो डिसेंबर जे जिंस रे चली थिला सेते बेले से लोक गुडा जो माने हिंदूस थिले से माने कहले कि दिस इज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी हला ए सब जिंस चलीला तो अंबेडकर डिड नॉट एक्सेस द टैंक अगेन बट से कौन कले मनुस्मृति ताको जळे देथिले मनुस्मृति कौन तुम जानथि ऑब्वियसली राइट मनुस्मृति को से जळे देले रिजेक्टिंग कास्ट आइडियोलॉजी एति तमरो वर्ण सिस्टम ए सब जिंस जो हमर आगरो लेखा हितला ए जिंसटा को से जळे देले रिजेक्टिंग कास्ट आइडियोलॉजी ओके एंड फाइनली 1937 ने लीगल विक्ट्री मिलिथिला तो पाखा पाखे 10 वर्ष रो स्ट्रगल एटा आफ्टर ए डेकेड लॉन्ग स्ट्रगल बॉम्बे हाई कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ डॉक्टर अंबेडकर legally opening the tank to all communities okay so chabdar tank sera मन रखि देबो हला chabdar tank आउ exact date year who was involved with this कोन issue हिथिला सब जानल तमे also shift to direct action Mahad marked a paradigm shift in Dalit politics moving from submitting petitions and memorial to the British government to taking direct mass mobilized civic action आगर कोन खाली दल माने ए सब फॉर्मली चलीथिला माने थ्रू पेपर वगैरह ए सब चलथिला बट प्रथम थर पे गोटे मास मोबिलाइज्ड एक्शन हम देखिया को पाइथिलो ए महाद सत्याग्रह रे एंड अंबेडकर स्पेसिफिकली दलित वुमेन मान को रिक्वेस्ट करथिले कि से माने जाई कि से जो प्रोसेशन गुडा को चलथिले सेतरे निजे शामिल हुंतु ओके सो ही स्पेसिफिकली अर्ज्ड द वुमेन हला साड़ी फाड़ी पिन्नी की तमे सब जाईगे ना सेतरे पार्टिसिपेट करो ही एनकरेज्ड वुमेन ओके द वुमेन इमीडिएटली कंप्लाइड मेकिंग महद एन अर्ली साइट ऑफ इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट असर्शन तो प्रथम थर पे वुमेन माने भी एते ह्यूज नंबर रे पार्टिसिपेट करथिले से सत्याग्रह रे ओके so the ideological battles fought at the Chabdar Tale laid the direct moral groundwork for the drafting of the Indian Constitution तो Indian Constitution तो से बहुत परे लिखिथिले ता पूर्व रो सब इवेंट सेही थिला ओके स्पेसिफिकली जदि हम कहबा सेही पई आर्टिकल 15 आर्टिकल 17 ता निहाती इंक्लूड करा गला कि आर्टिकल 15 कौन कहे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन को बेस करिकी किछि भी तमरो डिस्क्रिमिनेशन हबा कथा नुह कि हेई परिबो नाही हला सॉरी एक्सक्यूज मी एंड आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी तमे जानथिबो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ए दीटा जिंस हमरो से बैकड्रॉप रु ही आसीथिला he was the drafting committee रो चेयरमैन ना तो से निजे ड्राफ्ट करथिले तो ऑब्वियसली जहाँ भी इश्यूज अच्छे से निजे से टाइम रे देखिथिले से हिसाब रे तमरो कॉन्स्टिट्यूशन टाको भी ड्राफ्ट करा जायथिला ओके
कौन सब पहुँचे अच्छा हो द फ्रेज एटा तुम शुणी बिफोर सॉल्ट देयर वाज वाटर है ए फ्रेज टा बहुत शुणी तुम draws a powerful necessary parallel between two of India's greatest non-violent movement. अंबेडकर महद सत्याग्रह 1927 रही थिला गांधी जी दांडी मार्च 1930 रही थिला है ना तो बिफोर सॉल्ट देयर वाज वाटर वाटर पाए एतिकी तमरो सत्याग्रह भी हेइथिला सॉल्ट सत्याग्रह तमे सुनिथिबो पानी पाए भी सत्याग्रह हेइथिला है ना 10 वर्ष रो स्ट्रगल परे लीगली से माने बैटल भी जीतिथिले ओके तो गांधी जी जेतेबेले ब्रिटिश अगेंस्ट लड़ी थिले हैला गोटे एक्सटर्नल कॉलोनाइजेशन अगेंस्ट गांधी जी लड़ी थिले एपटे जदि देखिया हमें बी आर अंबेडकर गोटे इंटरनल कॉलोनाइजर माने आमे निजे निजर शत्रु आमर निजर कास्ट सिस्टम निजर सोशल इंपीरियलिज्म अगेंस्ट बी आर अंबेडकर लड़ी थिले ओके सो बोथ द लीडर्स यूटिलाइज द मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल गांधी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट टैक्सिंग सॉल्ट was a denial of natural right से भी कहले गांधी जी भी ऑलमोस्ट से थिले कि तुम सॉल्ट ऊपर जति टैक्स लगेबो देन तुम नेचुरल राइट को डिनाय करछ ओके अंबेडकर डेमोन्स्ट्रेटेड दैट डिनाइंग वाटर वाज अ डिनायल ऑफ ह्यूमैनिटी इटसेल्फ राइट पानी सॉल्ट ए सब ऊपर हमें एते कठोर हे परिबा नै ओके बीबी राम जी एक्ट पढ़ी थी ऑलरेडी है तो तार रिलेटेड आ गोटे आर्टिकल आछि जस्ट तुमको बस देखा चाहूली से आर्टिकल 24 states union territory set aside funds for new rural job scheme तो आगुरु जो मनरेगा थिला है मनरेगा थिला सेटा वर्तमान चेंज हो जाइए बीबी जी राम जी बिल हो जाइए एक्ट हो जाइए राइट तो यहाँ तुम ऑलरेडी जानी थी डिफरेंस कौन मनरेगा जो थिला जो थे कि तुम 100 days माने थिला कि 100 days जाए तुम एवरी रूरल हाउसहोल्ड को आमे जेमती हेले भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिवार अछि सेटा को अपडेट करा गला विकसित भारत जी राम जी रे 100 days को करा गला 125 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहितबार अछि ओके सबुटु मेजर डिफरेंस एया करा गला कि फंडिंग आई होप इट इज विजिबल फंडिंग ता चेंज करा जाइतिला हैला मनरेगा रे स्टेट रो फंडिंग रहउतला 10% सेंटर रो फंडिंग रहउतला 90% बीबी जी राम जी रे स्टेट रो फंडिंग रहइबो 40% सेंटर रो फंडिंग रहइबो 60% बट किछिटा जगह को छाड़ी की एबे देखा होची आई होप देखा होथबो टिके मे बी तुमको फाटी जाय पारे जो गुडा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अछंती हिमालयन स्टेट अछंती जम्मू एंड कश्मीर अछंती सेमान को पई एबे भी एटा लागू अछि हला जम्मू एंड कश्मीर रीजन पई नॉर्थर्न स्टेट्स पई एबे भी 90-10 रो रेशियो अछि बट जो बाकी जेति की भी स्टेट्स अछंती सेमान को पई वर्तमान 60-40 रूल अप्लाई करा जाय छी कि 60% सेंटर फंडिंग करबो आगुरु 90% करथला आ रेस्ट 40% स्टेट फंडिंग करबो एटा मन रखिबो हला तो से रिलेटेड आर्टिकल भी आसी छी कि स्टेट्स माने ऑलरेडी तांगर फंड अलगा रखुचंती बिकॉज ऑफ द न्यू रूरल जॉब स्कीम कोन बीबी जी राम जी एक्ट हला सेति में से माने वर्तमान अलगा फंडिंग तांगर अलगा रखुचंती हला states can notify up to 60 days in a financial year when work will not be executed हला मेन हला फंडिंग ए जिनसटा तमे खास करके मन रखिबो आगुरु 100 दिन थिला वर्तमान एटा 125 days हे जाई मेन ए दीटा जिनसो चेंज हे ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट
today's class. And जदि तमे लास्ट 19 years रो क्वेश्चन खाली प्रैक्टिस करिया को चाहो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज देन तमे ए बुक्स गुडा को नेकी एठो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करि परिबो हला 2006 रो 2025 सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन तुमको मिल जीवो सब सब्जेक्ट रो ओके सो तमे ए गिवन नंबर रे कांटेक्ट करिके किबा ऐप अछि से ऐप थ्रू रो भी तमे परचेज करि परिबो ओके सो थैंक यू एवरीवन थैंक यू फॉर योर पेशेंस देखा हम आमे नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट मंथ रे राइट बिकॉज मार्च तो सरी गला एप्रिल रे देखा हवा आउ केते दिन रहिला एप्रिल में 2 मास रहिला कहले चले तो लागी पड़ो भलसे पढ़ा पढ़ी करो जो माने ए थरो पई टारगेट रखिछ करंट अफेयर्स रो इंपोर्टेंस केते तुम जानि थिबो हला आमे एठी जो पढुछु दैट इज ओनली 60% कहि परिबा बाकी 40% आहुरी माने करंट अफेयर दिन को केते न्यूज़ आछी सबु तो आमे 2 घंटा कि घंटा दिटे कंपेयर करि परिबानी ना तथापि तमरो जो मैगजीन्स आछी राय एकेडमी रो तमे ताकू भी फॉलो करो हला स्टेट रो करंट अफेयर क्लास देखो ये क्लास देखो एंड निजे भी अपडेटेड रहू थाओ डेली ओके थैंक यू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बाय